Hi all, good morning, good afternoon, good evening, whatever the time you are watching this video. My name is Abhay Bharadwaj. I am IIT Roorkee graduate with Masters in Mathematics and Computing. Okay, so now in collaboration with Mahavir Institute, we are launching a series, a list of series where we'll be having different sections so that it takes you from the mathematical journey of very basic fundamental till JEE main and advanced, whatever you are interested in. Okay, not only JEE but other exams such as NDA or the UPSC mathematics that also require this fundamental knowledge. Okay, so the first series is very fundamental, okay, which we study till 9th and 10th class, but during my teaching experience I observed that students still feel issues with those concepts. Maybe they crammed during those classes, or maybe they need to revisit them. So I am creating that series. Okay, this is very first video of the first series which we have. The series revolves around equations. Okay, what are the types of equations we have, how we can solve equation, because any problem you take in mathematics or physics, it will boil down to an equation which you have to solve and find the value of the famous variable x or something else. Okay, so let's take in today's section linear equations. Okay, so somewhere we deal with equations only. Now equation can be of multiple types. Okay, so this is the first type, linear equations. Let's talk what is a linear equation. So linear equation is variable power equal to 1. Okay, an equation where the power of the variable is 1 is linear equation. Let's say the equation x plus 2 equal to 0. So x is our variable, we need to find the value of x, and power of x is 1. So this is a linear equation. We have quadratic equations, cubic equations, a system of equations also, but today we are just discussing one linear equation. Okay, so x plus 2, how do we solve this? X remains here and this 2 goes other side, it becomes minus 2. Okay, and you must all of you must be knowing this. So जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, the variable which we want to find, we keep it in one side, either left hand side or right hand side, generally on the left hand side, and the values or numbers we take to the other side. Let's say we are solving x plus 2x is equal to 3. Okay, so we have all the x on the left side, we just want to accumulate them, सबको एक बनाना है. ठीक है, तो 2x plus x हो गया 3x equals to 3. तो x कितना आ गया is 1. x is equal to 1. Okay, how this came? ये 3 यहाँ पे multiply हो रहा था, other side it went and it got divided. Okay, so x is 3 divided by 3. Okay, so x comes out to be 1. Now there can be different ways of doing this. Okay, and different difficulty levels. Let's say x by 2 plus 1 equals to x by 3. Okay, so now first we need to take all the x on one side and values on the other side. I prefer bringing all of them to the left hand side. तो ये यहाँ पे था, x by 3 यहाँ पे गया, it was positive there, it became negative. ये वहाँ पे गया, it was plus 1 here, it becomes minus 1. Okay, now we take LCM, it is 6, cross multiply 3x minus 2x equals to minus 1. So it comes out to be x by 6 equals to minus 1, and this implies x becomes, ये वहाँ पे गया multiply हो गया, minus 1 into 6 which is minus 6. तो x आ गया minus 6. Okay, there can be other types of questions in this. Okay, let's say 5x plus 6 divided by 3 is equal to x by 2. Okay, so again first we need to make however you want to do it. Let's first cross multiply and make it equation without fractions. Okay, so ये वहाँ पे जाएगा multiply होगा. ठीक है, 2 into 5x plus 6, 3 goes there, 3 into x, so it becomes 10x plus 12 is equals to 3x. ठीक है, now 10x and 3x, I'll bring all the x to one side, 10x minus 3x. अब इसको वहाँ भेजना होगा, it goes there, becomes minus 12. So this is 7x equals to minus 12.
तो हमारा x कितना आ गया -12 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो गया डिवाइड, ठीक है। x कम्स आउट टू बी -12/7. So if you observe what we are solving linear equations. This is a equation with variable x and the maximum power of x is 1. So this is system of not a system, this is a way of solving linear equations. Okay, now you may want to pause this video and try out one question. Okay, so the question would be x by 3 plus 4 by 5 equals to x by 5. Okay, you pause this video for a while. Okay, try to solve this equation and comment out what is your value of x. So how they ask is, they can ask, वो बोल सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ऐसे तो नहीं होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो. They can ask solve for x, ठीक है, कि x के लिए सॉल्व करो, find the value of x और find value of x, ठीक है. So if you paused it and tried, okay, now I'll solve for you. तो पहले सब x वालों को एक साइड ले आओ. मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको करने के, दोनों तरीके बताता हूँ. एक कि x वाले सब हम एक साइड ले आएंगे. ओके, ये उधर गया -4/5. नाउ द एलसीएम इज 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5x - 3x इक्वल्स टू -4/5. सो दिस इज 2x अपॉन 15 इक्वल्स टू -4/5. 5 3s, ठीक है, 2 2s, तो x comes out to be -6. Why? This 3 goes there. 3 into 2 is 6. दूसरा तरीका क्या होगा कि I will first take LCM and simplify it. तो इधर LCM लिया, it is 15. Okay, LCM लिया यहाँ पे, it is 15. Cross multiply 5x plus 12 equals to x by 15. ठीक है. Now not 15, sorry, it is 3. This is 5 only, ठीक है. Now 5 3s, I can cut it off, it goes there. Okay, 5x plus 12 equals to, वहाँ पे गया, क्या बन जाएगा 3x. Now x वाले एक साइड करना है तो 5x minus 3x equals to, ये वहाँ पे जाएगा -12. So now this becomes 2x equals to -12x. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, it will go there and get divided. So 2 goes there, this is divided by 2, it becomes -6. So answer should be same either way you do it. Okay, so if you are doing mathematically correct, answer will be always correct. Okay, now there are few mistakes I want to discuss with you which I have observed my students make. Let's say we have 5x plus 4 divided by 5. So some of them they'll say कि हाँ 5 से 5 कट जाता है, 5 से 5 we can cut, तो बन जाएगा x plus 4. Is it correct mathematically? No, it's not correct mathematically. Okay, so we do not have to do something wrong mathematically and बोलेंगे कि आंसर नहीं आ रहा. If you do each step properly, following the basic algebra, you'll never land at a wrong answer. So why this is wrong? You cannot directly see. If it was just 5x divided by 5, if it was just 5x divided by 5, I would have done कि 5 से 5 कट गया, it comes out to be x, ठीक है. But this is not just 5x, यहाँ पे 5x plus 4 है. So 5 is dividing both of them. How can you just आपने 5 से 5x वाला काट दिया और 4 को फ्री कर दिया? That is also being divided. Either you do it कि 5 से 5 मैंने काट दिया तो ये x बन गया, प्लस 4 का एक शेयर है 5 का, ठीक है. But that is something which comes after practice. So if you are beginner, if you face difficulty with this, you just think that आप तब तक नहीं काटेंगे जब तक कॉमन ना हो, ठीक है. जैसे 5x प्लस 4 है डिवाइड बाय 5, तो 5 कॉमन नहीं है दोनों में, आप नहीं काटेंगे, ठीक है. जैसे अगर ये होता 5x प्लस 10 बाय 5, तो इसमें आप कर सकते हैं 5 कॉमन लिया ऊपर, ये बन गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5. अब काट दिया तो कितना आ गया x प्लस 2. तो ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है. अब कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, एक और क्वेश्चन है. आई वांट यू टू प्रैक्टिस x by 3, x by 4, x by 5 is equal to 10 by 3. ठीक है, let's
लेट्स सॉल्व दिस, ओके। तो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स में जितना मर्जी गंदा दिखने वाला क्वेश्चन वी कैन मेक, ठीक है, यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड ऑफ दैट, ठीक है। सिंपली गो बाय द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन टफ हो आसान हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सारे एक्स अपने एक साइड हैं, लेट्स टेक एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20x प्लस इसको इससे डिवाइड किया 15x प्लस इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया 12x, दिस इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। लेट्स क्लब द x, 20, 35, 37, 47x, इसको वहाँ भेज देते हैं, 60 इंटू 10/3, सो 47x इक्वल्स टू 600/3, ठीक है। इसको भी काट दो, 200, तो x कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। तो आ गया जो आ रहा है वैल्यू x की, इसमें हमारा थोड़ी जेब से कुछ लग रहा है, ठीक है। जो आ रहा है मैथमेटिकली चीज़ों को करेक्ट करना है। प्रॉब्लम देखने में टफ हो सकता है, देखने में गंदा हो सकता है, लेकिन इट विल बॉयल डाउन टू समथिंग विच यू कैन डू, ठीक है। सो इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑन दिस एलसीएम पार्ट, ठीक है, यू कैन कमेंट, आई विल क्रिएट अनदर सीरीज इफ यू फील कि एलसीएम वाला पार्ट भी स्ट्रांग नहीं है तो उस पर भी एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर दिस स्कोप ऑफ वीडियो विल रेस्ट्रिक्ट इट टू लीनियर इक्वेशंस। आई होप यू आर क्लियर विद द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। And before I leave, I will give one question for you to practice, okay. You solve it and reach out to me in comments, okay, with your answers, okay. So 1/x plus 2/x equals to 10, ठीक है। You can try to solve this. Second, x/1 plus x/2 equals to 10, ठीक है। तो देखने में कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, go properly with the fundamentals and try solve these two questions and comment your answers in the comment box, okay. That's all for this video. We'll see you in next video, okay. Thanks for watching.